A Watcher of the Dead. So the very first theme is the racial tension and inequality. The story exposes the deeply rooted racial division and the restriction placed on black individuals based on solely on their skin color. तो हमारे पास रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस या डिविजन्स या सेग्रीगेशंस इसी पे होती हैं कि हर इंसान का किस किस्म का स्किन कलर है या टोन है और इन ब्लैक इंडिविजुअल्स इधर रेशियल टेंशंस और इनइक्वालिटी से गुजरते हैं इस शॉर्ट स्टोरी में. देन वी हैव लॉस एंड ग्रीफ. तो लॉस इज़ व्हेन यू लूज अ पर्सन एंड ग्रीफ इज़ द बेसिक sorrow or the mourning. So grief and mourning are universal experiences, but the story also explores how societal barriers can complicate and restrict how people grieve, particularly in marginalized communities. तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि इन लोगों के फ्यूनरल्स में भी सेग्रीगेशंस थी. वाइट men of the society differently funeral अरेंज करते थे और black community differently funerals अरेंज करती थी because there was the segregation in the society. और societal barriers भी थे जिसकी वजह से people used to grieve differently और ये marginalized communities के लिए particularly था. Then we have the power of memory and storytelling. सो थर्ड थीम में ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जो लाइफ में नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो हमेशा मेमोरी में रहते हैं बट स्टिल वी यार्न फॉर होप. हम होप करते हैं बिकॉज होपलेसनेस जब आ जाए तो देन देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट और एलिमेंट ऑफ पॉजिटिविज्म और इंसान ऑप्टिमिस्ट नहीं रहता. तो एवरी ह्यूमन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और होप करता है कि ओके इन द फ्यूचर थिंग्स विल गेट गुड एंड इक्वालिटी विल प्रिवेल. तो देन वी हैव द रोल ऑफ रिचुअल एंड ट्रेडिशन. तो रिचुअल्स ऑफर solace and a sense of continuity in the face of loss and injustice. तो सोलास जो है वो कंसोल को कहते हैं कि जब आप एक ग्रीफ में हो और स्टिल you have that calmness in yourself, you have the tranquility. इस तरह है. तो हमारे जो रिचुअल्स और कल्चर है इवन व्हेन जो क्लोज्ड वंस या रिलेटिव्स मर जाते हैं तो स्टिल हम प्रे करते हैं कि आई विश एंड वी ऑल विश कि हमारे दिलों में सुकून हो या सुकून आ जाए. एंड ओके सो द लास्ट थीम इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन एंड होप. So despite the oppressive context, the story leaves a glimpse of hope for personal and societal transformation. So redemption का मतलब है to redeem, like किसी भी एक कॉन्सेप्ट एलिमेंट के लिए आप कंपनसेट करो एक दूसरे बंदे को. सो वट एवर वी गो थ्रू इन आवर लाइफ्स द नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड दैट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड अस और सराउंडेड बाय अस. तो देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडेम्पशन कि आप उसको कैसे कंपनसेट करते हो अपने एक आपने गलत काम किया है दूसरे के साथ. सो देन यू कंपनसेट द अदर पर्सन विद एनीथिंग गुड इन देयर लाइव्स. हमारे पास कुछ कोटेशंस हैं दैट आर अलाइंड विद द थीम्स वी हैव नाउ डिस्कस्ड. सो द फर्स्ट इज़ डेफिनेटली द रेशियल टेंशन एंड इनइक्वालिटी. तो इसमें एक कोट है, यू शुड नॉट वॉक हेयर आफ्टर डार्क, द वुमन सेज हर लो वॉइस एंड हर्ड. There are bad times for us. Now this highlights the constant fear and vulnerability the black South Africans faced under apartheid. तो हम कभी भी रात में इस तरह बाहर नहीं जाते या वॉक नहीं करते बिकॉज देयर इज़ द सेंस ऑफ फियर. तो ये जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला है ये ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स के लिए बोला है क्योंकि द government or the authority they were having on themselves were the white people. Then we have loss and grief. The little grave, his voice
catches. It makes me feel empty inside. Now, this statement says that this simple statement conveys the protagonist's profound grief for his lost child. The third quote is the we must remember. He says we must keep their memory alive for ourselves, for them. Now, this important quote highlights the remembering of the past and honoring the stories of those who are gone. ये quotations इसलिए भी important होते हैं कि whenever you are giving critical analysis or the summary or you are writing an answer in the paper, so you can add these quotations with explanation and it will give your answer the very depth teachers are finding. Moving towards the other quotations, the role of ritual and tradition. So the quote is he lights a match and sets fire to the paper corn of incense, a ritual that soothes some aches within him. Now, the act of performing traditional rituals provides comfort and connection to his cultural heritage. Now, whenever if we take the example of our daily life, so our elder ones और जो aged होते हैं हमारी family में या immediate family में, तो हमेशा वो कल्चर को फॉलो करते हैं बिकॉज कल्चर में एक सेंस ऑफ कामनेस होती है, ट्रैंक्वालिटी होती है, एक कनेक्शन होता है दैट गिव्स पीपल solace और स्मूथ्स आउट द एक्स इन देयर हार्ट्स. तो वो उनको बहुत इम्पॉर्टेंट लगते हैं अपने कल्चर को फॉलो करना, कल्चरल हेरिटेज को. देन वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन एंड होप. सो द कोड फॉर दिस इज he looks at the stars, they seem different tonight, more remote yet closer, holding a secret promise he couldn't decipher. Decipher का मतलब है to decode a technical message. और इधर जो है ऑक्सीमोरॉन या पैराडॉक्स का जिक्र है more remote yet closer. पैराडॉक्स ये होता है कि when you have two contrary ideas, two opposite ideas in a sentence, whereas oxymoron says that you have two contradictory ideas, like two opposite ideas in a word. So we here have paradox, more remote मतलब बहुत दूर है, yet closer still करीब है. So the explanation to this quote is the vastness of the night sky offers a sense of hope and the possibility of something beyond the immediate struggles of hope for personal and societal transformation. So whenever at night we look at the sky तो हम एक sense of hope में होते हैं और possibility हमारे दिलों में होती है, minds में होती है कि इंशाल्लाह next day हमारे साथ कुछ अच्छा होगा and we hope for something better. So this is what it was talking about, lack of nihilism or existentialism or absurdism and the more of hope